Today, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji approved two very important cabinet decisions which impact the lives of our people living in far-flung areas, in the villages. देश के जो कोने कोने में हमारे भाई रहते हैं उन सबके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आए, ऐसे दो फैसले किए गए हैं कैबिनेट में। पहला फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए किया है। BSNL के रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपीस का एक बहुत बड़ा पैकेज, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अप्रूव किया है। दूसरा फैसला है देश के वो गांव जिसमें अभी तक 4G सर्विसेज नहीं पहुंची थी टेलीकॉम की, उन सब में भी 4G पहुंचे। उसके लिए करीब 25,000 गांव तक दूरसंचार सेवाएं पहुंचे, 4G टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचे, उसका एक पैकेज अप्रूव किया है। तो ये दोनों पैकेज हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में, हर उस क्षेत्र में जहां पर आज सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही है, उन सब में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अंत्योदय पे जोर देते हैं। समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक वो सेवाएं पहुंचे जो सेवाएं बाकी सबके पास उपलब्ध है। गरीब से गरीब, हर गांव तक, हर वंचित तक, हर अवहेलित परिवार तक किस तरह से हमारी सेवाएं पहुंचे, उस पर हमेशा एक फोकस रहता है। इसीलिए जब पिछले साल लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हमारी सेवाएं अब सैचुरेशन लेवल तक जाएंगी, यानी हर गांव तक 4G पहुंचे, हर घर तक अच्छी टेलीकॉम सर्विस हो, उस पर एक फोकस किया जाएगा। हर घर को, हर परिवार को डिजिटल इंडिया का लाभ मिल सके, उस पर फोकस किया जाएगा। इसी तहत पिछले कुछ महीनों में बहुत एक डिटेल्ड सर्वे किया गया। उस सर्वे के आधार पे जिस भी गांव में आज टेलीकॉम सर्विस नहीं है, उन सब गांवों को लिया गया। तो ऐसे करीब 25,000 गांवों के लिए आज अप्रूवल कैबिनेट में हुआ है, जिसका टोटल वैल्यू है 26,316 करोड़, 26,316 करोड़ का ये टोटल पैकेज है। मैं आता हूं BSNL पे। BSNL आप सब जानते हैं, टेलीकॉम एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर में BSNL एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है BSNL का, और विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमारे भारत के नागरिक BSNL पर ही भरोसा करते हैं और BSNL की सर्विसेज लेते हैं। इसके रिवाइवल के लिए 2019 में पहली बार पैकेज लाया गया था। उस पैकेज का बहुत फायदा हुआ, उससे BSNL एक स्टेबल कंपनी, स्टेबल एंटिटी बन के उभरी। आज के इस डिसीजन के बाद में BSNL एक बहुत ही सिग्निफिकेंट BSNL के कार्यकलाप में चेंज आएगा। वो चेंज किस तरह का है? इसके 3 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस चेंज। द फर्स्ट एलिमेंट इज अबाउट अपग्रेडिंग द सर्विस ऑफ BSNL। वी ऑल नो कि आज भी there are large parts of area in which BSNL is providing 2G and 3G services. This needs to be upgraded to 4G. 4G में upgrade करने के लिए क्या चाहिए? What do we need to upgrade to 4G? We need basically, first, the most basic raw material of telecom is spectrum. So we have to provide spectrum to BSNL. So that decision has been taken that the legacy spectrum which BSNL had will be once again reallocated. New spectrum for 4G will be allocated, and over next 1.5-2 years, spectrum for 5G will also be allocated to BSNL. So spectrum is there once, then we can use the technology and provide the 4G services. इसके लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, 4G का इक्विपमेंट लगेगा, नए टावर्स लगेंगे,
नेटवर्क मैनेजमेंट, बेस स्टेशन, जितना कुछ भी टेलीकॉम सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के लिए आज कैबिनेट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्पेक्ट्रम कॉस्ट, ये सब की सब अप्रूव हुई है। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना के तहत 4G टेक्नोलॉजी भारत में बनी है। आप सब जान के खुश होंगे कि आज भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो रहा है जिनके पास एंड टू एंड 4G की टेक्नोलॉजी है। हमारी जानकारी में कुल मिला के ऐसे कुछ ही देश हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को देश भर में व्यापक तौर पे इन अ वेरी एक्सटेंसिव मैनर दिस 4G डिप्लॉयमेंट विल हैपन ऑल ओवर द कंट्री. This technology is actually superior, better than the technology which has been imported from other countries. So with this, the BSNL services will become equivalent to or better than many other service providers over the next 1.5 to 2 years time frame. And once the 4G is in good position, then BSNL will also go for 5G in the coming 2 years. So all this will improve the quality of service, make sure that the customers who have been loyal to BSNL over a very long period, they get a good quality of service. The second element is BSNL की balance sheet को restructure करना. As all of you know, legacy issues के कारण और बैंक के बहुत बड़े डेट के कारण BSNL की बैलेंस शीट में बहुत बड़ा स्ट्रेस है. आज फैसला लिया गया कैबिनेट में कि जितने भी लेगेसी ड्यूज है, स्पेक्ट्रम के ड्यूज, AGR के ड्यूज, उन सब ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा. सो दैट वे BSNL बैलेंस शीट विल गेट डी-स्ट्रेस्ड. साथ ही साथ जो बैंक के कर्जे हैं, BSNL की बैलेंस शीट पे करीब 33,000 करोड़ के बैंक के कर्जे हैं, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा. सॉवरेन गारंटी यानी भारत सरकार की गारंटी से BSNL मार्केट से नया लो कॉस्ट का कर्जा उठाएगा और पुराने कर्जे को रीपे करेगा, पुराने डेट को रीपे करेगा. So that way the balance sheet of BSNL will become healthy. The third element of this entire cabinet decision is BSNL का जो फाइबर नेटवर्क है वो करीब 8.5 लाख किलोमीटर, 8.6 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है. That will be extended by merging BBNL. BBNL is the BharatNet project. BharatNet प्रोजेक्ट को BSNL में मर्ज किया जाएगा, जिससे 8.5 लाख ओरिजिनल नेटवर्क प्लस 5.5 लाख न्यू नेटवर्क. सो BSNL विल हैव 14 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. अभी हाल ही में BSNL ने बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें BSNL ने अपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को गांवों में रहने वाले नौजवानों के साथ शेयर किया और कहा कि भाई मैं जिले से नेटवर्क लेके आ रहा हूं, ब्लॉक से नेटवर्क लेके आ रहा हूं, ब्लॉक से गांव तक लेके आ रहा हूं, गांव से घर तक जो हमारा माइक्रो एंटरप्रेन्योर, गांव में रहने वाले हमारे नौजवान, वो साथी जुड़े और जुड़ के घर तक नेटवर्क को पहुंचाए. और इसमें इतनी अच्छी सफलता मिली है, BSNL इज नाउ एडिंग 1 लाख कस्टमर्स एवरी मंथ. BSNL is adding 1 lakh customers every month on this micro entrepreneur micro PPP model. इस मॉडल में जब 14 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर का नया नेटवर्क जुड़ता है, सो दिस बिकम्स अ वेरी पावरफुल फोर्स बाय विच प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना है, जो संकल्प है कि हर घर तक फाइबर पहुंचाना है, हर घर तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचानी है, दैट विल गेट इम्प्लीमेंटेड बाय दिस प्रोसेस. तो ये 3 महत्वपूर्ण फैसले हैं. मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर BSNL फैमिली एंड द टेलीकॉम इंडस्ट्री, दैट दीज आर पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस which will provide a very good, healthy
situation to BSNL going forward, and BSNL will emerge as a strong market stabilizing entity in the highly competitive telecom market. और साथ ही साथ जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों में आज के इस फैसले से बहुत जल्दी अगले आने वाले 1 से 1.5 वर्षों के अंदर अंदर टेलीकॉम सर्विसेज 4G टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचेगी. थैंक यू. सर, इसमें 1 लाख बीएसएनएल के साथ जो जुड़ रहे हैं लोग, वो कितने समय में जुड़ रहे हैं? मतलब हर महीने 1 लाख हर महीने 1 लाख कनेक्शंस एवरी मंथ. 1.64 का आपने ब्रेकअप बताया था, वो लिमिट अगेंस्ट BSNL के रिवाइवल के पैकेज का टोटल वैल्यू है 1,64,156 करोड़, 164,156 करोड़. इसका कैश कंपोनेंट है 43,964 करोड़. 43,964. नॉन कैश कंपोनेंट है 120,192, 1,20,192 करोड़. BSNL का रिवाइवल पैकेज करीब 4 साल का है, जिसमें मैक्सिमम काम पहले 2 साल में होगा, कुछ बैलेंस वर्क आगे आने वाले 2 साल में होगा. कुल मिला के 4 साल में BSNL एक नेट प्रॉफिट में आएगा, 3 साल के अंदर अंदर टाइम फ्रेम में आएगा नेट प्रॉफिट में. और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सर्विस है वो सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव होगी. सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा वो है. So whenever we add capital, whenever we infuse capital in a company, there are 2 ways of infusing capital, right? One is fresh equity gets issued. Second is it becomes a debt structure. In this case, the entire capital which is getting infused will be infused as equity, and because of the higher level of equity, now the paid up capital of BSNL will be increased as after today's approval of the cabinet from 40,000 crore to 1,50,000 crore. Right? So paid up capital of BSNL has been, the authorized capital of BSNL has been increased from 40,000 crore to 1,50,000 crore. सर, ये 40,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड यूज करेगा, ये सब BSNL करेगा या MTNL करेगा? इसमें MTNL का भी साथ ही है. अभी प्रैक्टिकली BSNL MTNL एक साथ ही काम कर रहे हैं. इन द सेंस अभी अपलोड कर देंगे ना. अपलोड हो गया ये सारा. वो नॉन कैश का भी ब्रेकअप से अगर आप दे दें 1.2 जो आप बोल रहे हैं, अपलोड हो जाने दो ना, सारा एक एक करके एलिमेंट टेबल करें. लेट इट बी अपलोडेड, आपको मिल जाएगा. बहुत कॉम्प्लेक्स है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए. many employees already taken VRS. So how Sorry? can you settle down that all those things? वो तो सेटल डाउन हो गया ना. 2019 का जो पैकेज हुआ था, उस पैकेज के बाद में BSNL का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन चुका है. इट हैज ऑलरेडी बिकम अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर. ऐसा कोई फ्रेश VRS नहीं है. I would request the regional entities to ask the question. रीजनल पेपर्स में से जो भी आया हूँ उनकी तरफ से क्वेश्चन लेना चाहूँगा. No regional papers here. वहाँ से पीछे से आप हैं क्या? I am from ETV. Yeah, ETV no, very good. You asked your question, right? Any other? Is So there in particularly Maoist areas, Yeah. the Dandakaranya and some other forest areas, how can you approach it? How can you give the connectivity from there? Two ways. First and foremost is through microwave connection. So let's say there are two towers. This is one tower, that is the other tower. There are two towers. Now between these towers, if you are not able to approach physically and lay a fiber, then we provide a radio connection between them.
So radio connection can be microwave, it can be E-band, it can be V-band. So that kind of connectivity, which is a wireless connectivity between these two towers, that connectivity we will be using to significant part in the areas which are inaccessible. Second way, of course, is VSAT, but VSAT it doesn't provide that kind of bandwidth. So we will be focusing more on the microwave and E and V bands. What happened to the MTNL BSNL merger? MTNL BSNL के मर्जर का जो फैसला है दैट इज स्टिल देयर, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, इसीलिए उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लेके जा रहे हैं. Will it continue or it will be put off? बहुत इसमें अभी और काम बाकी है, थोड़ा और काम करेंगे उसके बाद में आपको बताएंगे. सर ब्रॉडली जो पैकेज था रिवाइवल का बीएसएनएल के उसके डेब्यू के बारे में कुछ शेयर करेंगे. Where did we move from? From the previous one. Yeah. So the previous package, which was 74,000 crore rupees package in 2019, that has given a very good lifeline to BSNL. How? Before this package, practically BSNL was making operating losses. When we say operating losses, it means if the revenue is less than the overall expenses, the operating expenses, then it's an operating loss. That's not a sustainable situation. So the 19 package has helped BSNL come into operating profit, which means the revenue is today more than the operating expenses. Today BSNL's revenues are of the order of 19,000 crore annually, and the operating expenses are of the order of 18,000 crore. So 19 minus 18, 1,000. So 1,000 crore is the operating profit now of BSNL. That is a direct result of the 2019 package. Now once a company comes into operational profit, then we can say that now it is a viable entity. Now the financial restructuring needs to be done. Once the financial restructuring is done, then it becomes a profitable net profit. It comes into net profit and the company can then become a sustainable company. So that is the outcome of the previous package, and today's package will help us make BSNL as a purely sustainable company. So the presentation of the 2019 package shows that BSNL should have a EBITDA of 7,583 crore in 21-22, the past fiscal, and a turnover of 28,000 crore, which have not been met actually. And we are far away from that. You're talking about 1,000 crores. Actually, it was envisaged to have 7,583 crores as per the presentation of government. बिल्कुल देखो, बहुत सारी परिस्थितियां बीच में आई. We all know the COVID situation. We also know that we took a conscious decision that we will be developing our own 4G, which is a very important decision. And I thank Prime Minister Modi ji for having that confidence in the country's engineers. So that decision was a very, very critical decision, very important decision. That, in a sense, has given us the strength today by which, even though the pain has prolonged, but the future, because of the pain that we took over the previous 3 years, because of that, the future becomes much more healthier. Private operators are now moving 4G to 5G than Yes. other advanced versions. Now BSNL is going to 2G, 3G to 4G. Then after 2 years, you are saying the 5G. Correct. So the 4G that has been developed in the country is a system on which we are now developing, and a reasonably successful solution has already started emerging, on which we are developing the 5G. As we all know, to have 5G, we must have 4G. This is a step we must cover. I mean, this is technically, it has to be done that way. So that's why having 4G network as the first step is very important. But we'll not wait for a long period in BSNL. BSNL will rapidly move from 4G to 5G. Sir, as you Yeah, said, Mantri, Suryamurthy from the Telegraph. Hello, Suryamurthy. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. Can we have an update on the 5G auction? For the second auction? Everybody is waiting for that. Thank you for asking that question. So let me come to that. I'm very happy to share with all of you that the auction is continuing even today, and it is going to continue till tomorrow also.
So far at the end of the ninth round, we have grossed about 1,49,000 crore, 1,49,454 crore. We have been able to successfully generate the confidence in the industry, the way Prime Minister Modi ji has reformed this sector and given a totally new life to this sector. Today, telecom sector is seen as a sunrise industry, and much of the legacy issues are behind us now. And good competition, healthy infusion of technology, good infusion of capital, substantial increase in the availability of spectrum, all those things which are needed for providing good quality of service to our 140 crore Indians, that kind of ecosystem has got developed. And very happy to say that almost all the operators are seriously looking at Make in India telecom equipment and the Make in India 4G and 5G network solution. So that in my personal opinion, that's a much bigger achievement compared to the auction amount. Very important that in our country, which has the best of the brains, we should be developing, having and using our own 4G and 5G technology stack and taking it to the world. Make in India, make for the world. That's what Prime Minister Saab says. So that thing is now getting real. Has the auction ended? No, it has not ended. It is going to continue tomorrow. But it has ended for today, right? Of course, for the day. And this 149,454 crore is at the end of the ninth round? At the end of the ninth round. Exact है 1,49,454 है कुछ और सेम नंबर ना करेक्ट है बहुत अच्छा रिस्पांस है लो बैंड्स में भी बहुत अच्छा रिस्पांस है मिड बैंड में भी अच्छा है मिलीमीटर वेव में भी बहुत अच्छा है all the three different the complete spectrum has been taken by the people by the operators and it's a very good response. We are very happy there is very good response in 700 megahertz. Why this is important? 700 megahertz is very important for the far-flung areas of our rural India. All those places, coverage is very important. To get good coverage, you need a lower band. So lower band of 700 megahertz, which was never sold in the past, has been sold this time. And we are confident that this will provide a very good quality of service to the far-flung areas of our country. So there's a question from Kerala, Malayalam agency. They want to know about the viability gap funding for rural broadband operations. Details on that. Excellent question. Thank you for reminding. The rule. See, all of us know that BSNL has a commitment of providing services to the rural areas, even if they are not viable services. Very unfortunately, the previous governments never repaid or never met the viability gap which was there on these services. So that entire amount which was pending to be paid has today been approved and government will provide 13,789 crore. 13,789 crore as viability gap funding to BSNL for its rural wireline operations done in the past. And it will continue to provide this service for this VGF for the coming 5 years also. 5 years? Yes. Any more questions? Sir, you have said that BSNL will go for low cost debt through using a government guarantee. Is there any estimate that how much annual saving can be done for shifting of those debts? Okay, so that's a very, very good question and that will require a lot of calculation. No, but chairman also did that. That's why So what I would recommend is, see, what is important. The most important thing is the way strongly we are committed to support BSNL in a strategic sector, and the strength with which BSNL will provide good quality services to the rural areas.
That is the most important thing. For that, whatever needs to be done, Prime Minister Modi ji has given that complete support to BSNL. That is most important. I'll request the regional channels to come up with your questions, because BSNL services are mostly used in far-flung areas, in the rural areas. That is where the impact is more. So I would like to have the questions from the regional media. So one Any other question from question? Chennai has come, sir. So he's asking about Mr. Ramaswamy. Will infrastructure created by BharatNet be available to other operators, telecom operators? Vanakkam. Yes, the BharatNet network, Mr. Ramaswamy, will be available to everybody on a non-discriminatory basis. So let's say if tomorrow somebody wants to provide an innovative solution to a village in Madurai, to a village near Madurai, then this BharatNet can be used. The optical fiber network which has been laid as a part of the BharatNet project can be utilized for providing that innovative service to the villagers near Madurai. Sir, you said that monthly 1 lakh connections is adding through fiber. How many connections you are losing monthly? About 15 to 17,000. So net addition is about 80,000. That's a churning process will always be there, right? These losing connections is wireless connections. No. I'm talking of the fixed line, the broadband connections. Wireless connection is more or less stable at about 11 crore. About 11 crore wireless connections are stable at. Sir, so two things. One, so can we have a operator-wise breakup of like who, what, how much? 5G, we'll be uploading the entire thing today, the day report. Operator-wise breakup should be available to you after the auction is complete, which means we don't want it to complete. We would like it to proceed further. Every auction means every round means more revenue. The bidding price is almost the same as the reserve price. Any comments on that? I shouldn't comment on that at this point of time because the auction is still going on. So we should talk only that much which has been published by us, by the auction system on the net. So, I have a question here. Yesterday, it was 3.3 gigahertz and 26 gigahertz and 700 megahertz which saw maximum demand. Today, did you see the same trend continuing, or did you see other bands, demand for other bands come up as well? That is my first question. Second, so far as the bids are concerned, as the demand is concerned, as well as the timeline, because the industry and there were wide expectations that day 2 would be the concluding day of auction. Are you pleasantly surprised on both the fronts? I'm pleasantly surprised. I'm happy that there is very good competition. Now there is competition in 700 megahertz band, 800 megahertz band, 900 megahertz band, 1800 megahertz band, 2100 megahertz band, 2500 megahertz band, 3300 megahertz band, and 26 gigahertz band. There is good competition in almost all across this table. We can see good demand. Sir, has any operator bought more than 50 megahertz in the bid plan? Impossible to say, should not say. Spectrum auction is right now going. We should not say. Morally, ethically, business-wise, it's all wrong. Sir, when do you see BSNL turning net profitable? Within 3 to 4 years. Yes. Hopefully with less than that. बट आप फिर मुझे पूछोगे कि 3 साल हो गए. अभी आपने सारे नंबर रखे हुए हैं आपके सामने. Very clearly defined quantum, whatever BSNL has asked has been reserved for BSNL. So BSNL will never be short of spectrum. देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर को रिफॉर्म करना चालू किया तो जितने भी बहुत सारे जो पेनफुल इश्यूज थे इस सेक्टर के, वो सारे पेनफुल इश्यूज एक एक करके फिनिश हुए. आज इस सेक्टर में एक नई ऊर्जा है.
इस सेक्टर में एक नई जिंदगी है और एक सनराइज सेक्टर बना है। तो आज जो ऑक्शन का जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिविटी, ये ओवरऑल इकोनॉमिक मैनेजमेंट और सेक्टर के रिफॉर्म्स के कारण दिखाई दे रही है और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा इसका रिजल्ट ये आएगा इसका कि हम सब जानते हैं स्पेक्ट्रम टेलीकॉम सर्विसेज का बेसिक रॉ मटेरियल है। बेसिक रॉ मटेरियल अगर चाहिए तो स्पेक्ट्रम है टेलीकॉम में। तो जब रॉ मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होगा तो देश भर में जो सर्विस की क्वालिटी का इश्यू आता है कई बार, वो सर्विस की क्वालिटी का इश्यू अब इससे बहुत मात्रा में सॉल्व होता है। सर, एक वोडाफोन का इक्विटी कन्वर्शन का इश्यू अभी भी पेंडिंग है, तो कब तक रिजॉल्व होगा? थोड़ा उसमें टेक्निकल इश्यू है, मैं आपके समक्ष वापस इसमें आऊंगा। So what is the further upside that you're expecting as the auction travels into day 3? What is the further upside? One is we now are seeing that it is now spreading geographically. Some of the areas which had less demand, now those areas are also getting good demand. That is first thing. Second is across the bands. Across the bands, so as I read out the entire list today, now practically every band has demand. So that is the upside we are seeing. So monetarily, like in the Monetarily, the increment is now obviously, as the S curve goes, it goes like this always. सर ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେତେ ଅନକଭର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? बहुत नमस्कार आपको और धन्यवाद। ये प्रश्न कौन ना कहले आपण गगन भाई, ओडिशा रे हमर अनकवर्ड विलेजेस अच्छी 6185 6185 सब गुड़ा कवर हो गए। How much? Namaste Andi, Bavunara. Yes, all the states are there. Entire country is one country, right? So Andhra has Andhra. Namaste Andi, bhai. Uncovered villages are 4,542. All of them will be covered. And Telangana, 406 villages are uncovered. They will all be covered. All the states. There is Prime Minister Modi ji is very clear. Sabka Saath, Sabka Vikas. Doesn't discriminate between anybody. Absolutely no question of discrimination. And I love all the Indian languages. That's why I'm trying to speak a bit of every language. Anybody from Karnataka? Teganderi. Chinnaki Deli. He's giving more. He says 20% more we can do.